Hello everyone, I am Promit and you are watching my YouTube channel. So today is my second motovlog actually, and today we are heading towards Triveni. In Triveni I have two places to visit. One is the Dargah of Zafar Ali Khan and the another one is Hanging Wooden Bridge over Kunti River. Approximately 60 kilometers far away from my home location. So let's go there. You can look there, a beautiful sunrise. So now it is morning and the time is 6 a.m. It will take 55 minutes to reach over there. So let's go. अगर ये रोड सनराइज़ के थोड़ा स्ट्रेट होता तो और भी अच्छा लगता, बट इट्स ओके। सुबह बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है भाई। जो ठंडी ठंडी हवा लगता है ना, मज़ा ही आ जाता है। Nice road. This road is a little bit scenic, you know. Greeneries are there. इसके आगे जो रोड था ना वो क्या पता, वो दिल्ली कोलकाता हाईवे, वो थोड़ा बोरिंग है। और उसके बाद जो दिल्ली रोड है वो भी थोड़ा सा बोरिंग है, उसके बाद दिल्ली रोड अच्छा हो जाता है। सो लेट मी गिव यू अ लिटिल ओवरव्यू ऑफ द रूट दैट फ्रॉम कोना यू विल टेक दिल्ली कोलकाता हाईवे, देन यू विल टेक अ राइट टर्न and you will take Delhi road, then you will ride straight through the Delhi road and you will reach Magra Flyover. After Magra Flyover you are going to take a left turn, then you will reach SITK road, and after SITK road please use Google map because that area is a little bit complicated. So Google map का यूज़ करो। हाँ, पूरा भरोसा मत करना, थोड़ा थोड़ा लोकल्स को भी पूछते जाना, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। यू विल गेट लॉट्स ऑफ धाबाज एंड रेस्टोरेंट्स हियर, यू कैन टेक योर ब्रेकफास्ट हियर। सो लेट्स गो। By the way everyone, today I am riding solo because Deepan is out of station and my old friends are busy, so today I am riding solo. तो कुछ लोग क्या होता है ना कि डरता है, मतलब अकेला निकलने में, अकेला राइड करने में थोड़ा डरते हैं। तो डरो मत, कुछ नहीं होता, लोकल्स रहता है और लोग आपको हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि रास्ते में कुछ हो गया तो लोग आपको हेल्प नहीं करेगा, तो लोग हेल्प करेगा, तो डरो मत। अगर अकेला निकलना है तो निकल जाओ, बस मज़े लो ज़िंदगी का। कुछ मत सोचो, ऐसे ज़िंदगी आपको परेशान करेगा, रास्ते में बाइक ख़राब हो जाएगा, कुछ वगैरह वगैरह हो जाएगा, वो सब मत सोचो यार, बस चलाते रहो, कुछ नहीं होगा।
हाँ, कुछ चीज़ें जान लो पहले कि अगर बाइक रुक गया तो क्या क्या चीज़ें चेक करना है। जैसे कि बाइक अगर रुक गया तो कुछ कुछ चीज़ें देखना होता है। जैसे कि अगर आपका फ्यूज़ में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम हो सकता है, तो कुछ कुछ चीज़ें बस देख लो कि आपकी बाइक में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, या दिक्कत हुआ तो कैसे चेंज करना है, बस वैसे। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी पीपल कि अगर आप निकल रहे हो घर से राइड करने के लिए, और एक लॉन्ग राइड है ये, तो अपने पास वो लीक ठीक करने का जो किट है ना, मतलब ट्यूबलेस टायर की जो किट है लीक ठीक करने का, वो अपने पास रख दो। और एक छोटा सा पंप ख़रीद लो, वो आता है रेडमी का छोटा वाला, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। सो बाय दैट वन एंड कीप इट विथ यू, यू विल not face any problem, I think. So we have reached Magra Flyover. Wow, the Magra Flyover is beautiful. To take this one. So now we have reached SITK road, I think. Yeah, this is SITK road. What is doing? Oh, such a nice bumper. All of a sudden it comes in front of you. Nice place, by the way. I have to take this road. Nice. Hello locals of Triveni, how are you? जिंदगी में मजा आ रहा है कि नहीं? This road is congested, man. So let's skip this one. I think we have reached the Durga. Yeah. Oh, nice place, man. I think this road. Whoa, nice place. Is it opened or not? Let me check. I think it is opened. I'm going to park my bike here. Okay, we have reached. This time they have not allowed me to take any video. I don't know why. The security guard has said me that don't capture any video or any photo. It is forbidden by the committee. But the last time when I came here with my friends, I have captured lots of videos and photos, and that time
the security guard has allowed us. I don't know why. लेकिन उस पर बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किया था मैंने, बहुत सारे मतलब बहुत सारे. I think the committee has changed, or the committee is same. The committee has changed their rules. I don't know what is happening. So now we are heading towards Kunti River. I mean hanging wooden bridge over Kunti River. Sorry. So let's go. So we are on the same road again, that SITK or STKK, whatever it is, on that same road again. And I will go straight, then I will take a right turn. Okay, so let's go towards that hanging wooden bridge of Kunti River. Let's go. नाइस ब्रिज, बढ़िया है. नाइस ब्रिज. Nice place. Let's take a picture over here. This one. Let's go. I've chosen this road because this road is through the rural area, and you know I love rural areas so much because greeneries are there, peace is there. So we are heading towards home, and if you guys are watching the video and if you guys are liking this video, then hit the like button. Please leave a comment that what I have to improve, and please subscribe to my channel to motivate me.
So see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care.